Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah khatmun nabiyyin wa rahmatullahi alamin. Education makes people easy to lead and govern, but difficult to drive and impossible to enslave. इसकी जो वेरासिटी है उसको देखने के लिए हम ना दुनिया की तरफ नजर दौड़ाते हैं, माशरे की तरफ देखते हैं कि really I mean education makes a difference. Societies or the nations which are literate, do we find good things there? Do we find man is liberated or the man is still under the shackles of the aristocracy and the elite class? Or they have got their rights from them, I mean the ruling elite or the people in power. हम कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन जो गवर्नेंस मॉडल है दैट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. It means the people are the most powerful entity in that society. And do you think what is the difference between a third world country and a developed country of the West? The reason is simple. There is a democratic rule. The people are in power really. People doesn't need to belong to aristocratic family to become part of the government. Even ordinary person, if fulfills all the prerequisites to be there in that position, he or she will be selected. And that's why we see many people from the middle classes, they have got the highest slot like chief executive of that state. 101 examples in the West. But you won't find any such example in the third world country. That's why they are third. Mean they believe that the lower classes, the poor people, they have to remain as subjects, not the rulers. They believe that your dynastical relationship, your ethnicity, and your affluence, I mean your worldly or material status, that counts a lot to be whether you are supposed to be the ruler or supposed to be the ruled one in those societies. Now, basically, we are coming to the education. What education brings, what education teaches us, क्या सोचों में तब्दीली पैदा करती. आप देखें यही यूरोप था जो वेलफेयर स्टेट है और ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, and to a great extent the human rights are really protected there, no doubt. But these were the people who were not, I mean, shy of enslaving human beings. All the black Africans, they were hunted like animals. They were enslaved, put into chains, and they were sold in the markets of America, in the markets of Latin America or the North America. Same people. But once the slavery was there, now again we have to look into the reason how these slaves got rid of that institution of slavery. What made them to fight for their rights? ये education का मतलब ये नहीं है कि you can read a book. Education means how you can become aware of your rights and the duties of those who are in the power, and you become, I mean, aware of your self esteem. ये जो self respect है, ये सबसे बड़ी इनपुट है और सबसे बड़ा डिविडेंड है और सबसे बड़ा बेनिफिट है जो एजुकेशन आपके ज़हन में इनकलकेट करती, आपको अपनी जात को पहचानना सिखाती है और आपको एक बाइज्जत इंसान समझना सिखाती. वरना दुनिया के ताकतवर तबकात आपको ना बाइज्जत समझते हैं, ना आपको इस काबिल समझते हैं कि आप उनकी जगह ले. ये तालीम पैदा करती है, क्योंकि एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रीजनिंग. वो क्वेश्चन करना सिखाती है. अगर व्हाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है तो वो क्वेश्चन करते हैं, who gave you this right कि you should rule as being white, whether you are white, I mean by your choice, or you were born as a white on account of the decision made by the Almighty Allah. It is his scheme of thought that you were born to the white parents. If you were born to the white parents, what is your contribution in that? एजुकेशन तो रीजनिंग सिखाती है. बताएं आपकी क्या फनकारी है उसमें कि यू आर वाइट स्किन पर्सन. नथिंग ऑन योर पार्ट. यही तालीम सिखाती है इफ अ पर्सन इज ब्लैक, व्हाई यू डिस्क्रेडिट हिम और हर बीइंग ऑफ ब्लैक कंप्लेक्शन. बताएं he or she is black because he or she was born to the black parents. What is fault on his or her part? उसमें उसकी गलती क्या है? आप उसको पेनलाइज कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ बीइंग ब्लैक. ये किसने बात सिखाई? ये इल्म सिखाता है. फिर वो बताता है कि अगर आपने रिस्पेक्ट देनी है, हु शुड बी रिस्पेक्टेड, व्हाइट और ब्लैक? वो कहता है नथिंग टू डू विद द कलर,
or with the ethnic background, the linguistic or the geographical habitat. Nothing to do with that. The person who has to be respected more should be that who is more useful for the society, who is beneficial for the society, who has a solution for the problem society is confronting with. वो है मुफीद शख्स. अब बताएं जब तालीम ने ये कहा, if you pick up that person and put it, I mean, at a position of responsibility, you are doing a very good job. Because when such persons are there who are full of qualities, abilities, potentials, and capacities, and they have willingness to perform, society will be a better society. ये चीजें किसने सिखाई? तालीम. और जब इन्हीं स्लेव्स के पास आ गई, जैसे मैंने कहा किताबों से तालीम नहीं आती, तालीम का एक दूसरा बड़ा हिस्सा होता है एक्सपोजर. When a person is exposed to the logic and reasoning by any means, he altogether changes. उसकी बातें बदल जाती हैं. वो क्वेश्चन करना शुरू करता है. Who gave you this right to enslave me, hunt me from Africa and bring here and sold me like ordinary thing or the chattel? क्वेश्चन करता है. किसने आपको इख्तियार दिया? Just for one reason that the gun was in your hand. फिर दुनिया में ये बात हुई. ह्यूमन राइट्स की बातें बाद में हुई. अब सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आई मीन द पॉलिटिकल थिंकर्स एंड द फिलोसोफर, दे स्पीक अबाउट द ह्यूमन राइट्स. पहले डेमोक्रेसी की बात करते थे, अब वो ह्यूमन राइट्स, इंसान की आजादी की बात करते. इंसान को आजाद कर दो, जो वो कहता है उसको कहने दो. अगर आपको नापसंद है, आप उसको कन्फ्रंट करें विद लॉजिक एंड रीजनिंग, और दुनिया सुनने वाली देख लेगी हु इज राइट. बट लेट एवरीबॉडी टॉक एंड स्पीक हिज और हर माइंड. ड्राइविंग और enslaving का मतलब ये है, they want to put shackles around your brain, cognitive or the innovative abilities. And these shackles are there in the third world countries. And result is no invention has taken place for the last 1000 years. ये तालीम सोच सिखाती है. और कौन सिखाती है? Otherwise, we believe that nothing wrong with the DNA. People born in Africa, people born in Asia or Latin America, I don't believe there is something wrong with their DNA. The God is, I always say, not discriminative in showering the quality DNA only on the Western people or the white skinned people or cold climate people. The God has already showered this DNA even on those people who belong to the warm climate. And I always refer, the word is still, I am struggling to find the clue how these Pharaoh's civilization, they made these huge pyramids and the sphinx-like statues. When there was no engineering or the civil engineering or the architecture, this was not developed to that extent. How they made it possible, the symmetry, you see the symmetry. How the Mughals, I mean, made this world masterpiece of architecture like Taj Mahal and so many of the same category in India. वहां तो उस वक्त तो ना वो वेस्ट की इंजीनियरिंग थी, कुछ था. पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली यही स्लेव्स इन्होंने दे स्टार्टेड फाइटिंग. ये तालीम उनके पास ना आती, एक्सपोजर ना आता, दे वुड नॉट हैव फॉट एंड दे वुड हैव रिमेन्ड स्लेव्स इन अमेरिका. एंड दे फॉट and they got abolished slavery, and finally they become the president of the same country where they entered as a slave. इंसान तो एनस्लेव करना चाहता है. इन्होंने आजादी तो दे दी, लेकिन कहा फिर भी ये हमारे साथ नहीं बैठेंगे, बस हमें पीछे बैठा दिया. Again I refer the same thing. That's not a small incident for me. It could be a small incident for somebody else. The Rosa Parks, she denies now. She refutes and she rejects the demand that I should vacate the seat for white because the white is superior. She said, no, I don't think white is superior to me. When she refuses and she is penalized and imprisoned, she happily joined the prison. That is the start of the movement. And now the law of segregation stand abolished for all the times to come. किसने उसके ज़हन में ये बीज बोया? Rosa Parks के. The blacks, they have been standing and vacating the seat for the white quite for a long time. What the one person, तालीम ने जिसको नुक्ता समझा दिया था, जिसकी सेल्फ एस्टीम जाग चुकी थी, जो अंदर से आजाद हो चुकी थी, उसने एक आजाद आदमी की हैसियत से बयान कर दे दिया, मैं एडवोकेट नहीं करती, मैं प्रोटेस्ट करती हूँ इस लॉ के खिलाफ. अब देखें, एक आदमी आजाद हुआ है, सारे अमेरिका से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को खत्म कर दिया. कितने आजाद हैं. And the same thing you see, South Africa, यही मिसालें हैं. Apartheid that remained a law quite for a long time in
under the nose of this Western civilization. Even. And the white supremacy was there. They were in minority and they were ruling the majority. Nelson Mandela, again one person, he said this is wrong. He was imprisoned. 27 years is not a small time. Finally, what happened? You see, the right is destined to succeed in the world. ये तालीम बताती है सच ने जीतना होता है, इसका मुकद्दर है। क्या हमारा ईमान है? सच सच होता है और ताकत सरनगू कर देता है सच। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर था, मक्का फतह होता है, 360 बुतें एक एक को गिरा रहे थे, खुदा के सामने मुकाबले में आए हुए थे। अबू सुफियान के अल्फाज हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा जीत गया, हमारे खुदा हार गए। ये है मुकद्दर झूठ का। और हुजूर एक एक बुत को गिरा रहे हैं और फरमा रहे हैं हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल मिटने वाली ही चीज है। ये जितनी मैंने चीजें बात की हैं, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, सब बातिल है। इंसानों को रंग की बुनियाद पर पाबजंजीर करना और फरोख्त करना इंसानियत के तकद्दस के खिलाफ चीज थी, खत्म हो गई। यही वेस्ट है जहां सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड है। आई टेल यू, नॉट इन द थर्ड वर्ल्ड, नॉट इवन इन द इस्लामिक वर्ल्ड। सो सैड। इस्लामिक वर्ल्ड में भी इंसान उतना आजाद नहीं है जितना मगरब में। दैट्स व्हाई यू आर आफ्टर द वीजा ऑफ दोस कंट्रीज। किसी को मिल जाए तो उसको ऐसे लगता है जैसे जन्नत का टिकट मिल